Hello students. In the last class we discussed about quantum number. आम last class रे quantum number पढ़िथिलु दुईटा quantum number पढ़िथिलु कौन ना प्रथमे होची तुमर principal quantum number n तापर पढ़िथिलु azimuthal quantum number l. So we discussed principal quantum number n and azimuthal quantum number l. Then today we will discuss the remaining two quantum numbers. कौन कौन कहिथिली? Now one is magnetic quantum number m and another is spin quantum number s. So third one we will discuss regarding magnetic quantum number. Magnetic quantum number m or ml. So it gives us idea regarding orbitals. How is it already? ये कौन idea दिए हमको ना orbital. It gives us the idea regarding orbitals. So there are some orbitals under the subshell. Each subshell has some orbitals and it gives us the spatial orientation of orbitals. Orbital गुड़ा केमती space orient की थांती से अनुसारे accordingly their shape is defined. ताका shape सेमती define हुए. So it gives us the idea regarding orbital. Okay. So first let us know how m takes value. M रो value possible values केते देखिबा. So m takes value from minus l to plus l through 0. I'll repeat करछि m रो value केते हबो ना minus l to plus l through 0. That means in total how many values? कहिछि already 0 गोटे value. So l plus l 2l values plus 1. So that means in total there will be 2l plus 1 values. That means there will be 2l plus 1 orbital because for each value of m there is one orbital. m रो प्रत्येक value पे गोटे orbital रहिबो. So in total how many orbitals will be there? Na 2l plus 1 orbitals. So this you have to remember. So for a given value of l there will be 2l plus 1 orbital. l गोटे निर्दिष्ट value पे केतरा orbital रहिबो ना 2l plus 1 orbitals. Okay. So we'll start with this one, subshell. Last class में कोई सा shell ready? Subshell S, P, D and F. These are the subshells. Accordingly, what are the values of azimuthal quantum number? Now for S it is 0, for P it is 1, for D it is 2, for F it is 3. कोई सा चीज है? So S, P, D, F are the subshells and these are the corresponding values of azimuthal quantum number L. Okay. So next let us see what are the values of m. Values of m. That means magnetic quantum number. How to take the values? Now minus l to plus l through 0. So here the value will be only minus 0 to plus 0 through 0. So it does not mean anything. Only one value possible, 0. Only one value of magnetic quantum number m is possible. So number of orbitals. कौन कहली छुआ m रो जेतरा वैल्यू हबो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सेते हबो द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m will give you the number of orbitals. So only one orbital. What is that orbital? Na s orbital. S orbital. Remember s subshell has only one orbital. S subshell लो गोटी orbital रहबो ता नाम भी s. So s subshell has only one orbital. वैल्यू जा आछी छुआ वैल्यू अनुसार गोटी orbital रहबो ता नाम हबो s orbital. Then let us come to P subshell. What are the possible values of m? Now minus l to plus l through 0. So minus 1, 0 and plus 1. These are the three values of m. Which value cha? Minus 1 to plus 1 through 0. So how many values in total? Now 3. 1, 2, 3. तीनटा value रहला. तो केतरा orbital रहबो? तीनटा. कौन रहबो? ना px, py, pz. px, py and pz orbitals. So remember p subshell has three orbitals. p subshell कितना orbital रहबो ना तीनटा orbital रहबो ता नाम कौन px, py, pz. px, py and pz. Okay, then coming up to d. d l value is 2. So m value कितना हबो ना -2, -1, 0, +1 +2.
So in total how many values? 1 2 3 4 5. So there will be 5 orbitals of d subshell. d subshell कितना ऑर्बिटल लेबो ताले 5 टा ऑर्बिटल लेबो, namely dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. So d subshell समान रखिबो 5 टा ऑर्बिटल लेबो, नाम होची dxy, dyz, dxz, dx square minus y square, dz square. Then coming up to f subshell केतना रहबो छुआ ताले ना वैल्यू केते हो -3 -2 -1 0 +1 +2 and +3. केतना वैल्यू होला छुआ 1 2 3 4 5 6 7. So in f subshell there will be 7 orbitals. F subshell there will be 7 orbitals. So this is very complex structure and complex naming also. Are both structure are complex, naming भी बहुत complex. तेणु खाली छुआ मन रखिबो f subshell has 7 orbitals. आ ଗୋଟେ shortcut method बतै दउची to write down the orbitals कोन as per the values of m. केते लिखिबो छुआ f -3, f -2, f -1, f 0, f +1, f +2 and f +3. So this is how you have to remember, but their actual naming is different and it is quite complex to remember. So simply if you can remember only the number of orbitals, खाली बन रखियो पड़ियो f रो 7 टा ऑर्बिटल अछि. So खाली गुले तुमको जणेया पई एमती नेमिंग टा लिखि देछि. Okay, so you have to remember that f subshell has 7 orbitals, d subshell has 5 orbitals, p subshell has 3 orbitals and s subshell has 1 orbital. Now each orbital can accommodate 2 electrons. प्रत्येक orbital capacity केते ना capacity of each orbital is 2. गोटे ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 टा इलेक्ट्रॉन रहि परिबो विथ ऑपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ला परे अभी क्लियर कर देबै. So an orbital can accommodate maximum 2 electron, 2 टा इलेक्ट्रॉन रहि परिबे with opposite spin. ताले देखो चॉइस अनुसार बर्तन कैपेसिटी कर दवा, कैपेसिटी ऑफ सेल, कैपेसिटी ऑफ सबसेल. देखो एडी केतना s रो केतना रहला छुआ s रो गोटी ऑर्बिटल दुईटा इलेक्ट्रॉन रखिबो त s सबसेल रो कैपेसिटी होची 2. p रो देखो तीनटा ऑर्बिटल कैपेसिटी 2 * 3 6, d रो 5 टा 2 * 5 10, f रो 7 टा 2 * 7 14. So this is how you have to remember the capacity of subcell. हैला s subcell capacity 2 काहे की ना गोटी मात्र ऑर्बिटल अछि कहि सछि गोटी ऑर्बिटल कैपेसिटी होछि दुईटा इलेक्ट्रॉन तेन गोटी ऑर्बिटल छै टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या केते हो 2. एटी p has 3 orbitals, capacity of each orbital is 2, so 2 * 3 6. d has 5 orbitals, capacity of each orbital is 2, so 5 * 2 10 electrons. So f has 7 orbitals, each orbital can accommodate or contain 2 electrons, so total capacity is 7 * 2 14. अब आगो फार्मूला पढिथिलु छुआ कैपेसिटी पई ऑफ सबसेल केते 4l + 2. से अनुसार देखि दियो छुआ आर l वैल्यू होची 0, सो 4 * 0 + 2 2 या 4 * 1 + 2 6, 4 * 2 + 2 10, 4 * 3 + 2 14. देखो छुआ से अनुसार हे होची ठीक 10 10 14 14 6 6 2 2. Why? Now because for a given value of l, how many orbitals will be there? 2l + 1. प्रत्येक ऑर्बिटल कैपेसिटी केते 2. तेनु for a given value of l, how many orbitals will be there? Na 2l + 1 orbitals कहि सछि छुआ केतना रहउची ना 2l + 1 एटी बाहर कर चले. So each orbital can accommodate 2 electrons. So capacity
ऑफ सब सेल केते हिजो छुआ कैपेसिटी ऑफ ईच ऑर्बिटल 2 into 2l plus 1 केते होछ देखो 4l plus 2 एबे बुझियला कोठु आसला फार्मूला the capacity of each subcell is 4l plus 2 कोठु आछि ना इटु आछि गोटे सबसेल लो वैल्यू l डिसाइड करे केतना ऑर्बिटल रहइबो ना 2l plus 1 ऑर्बिटल रहइबो प्रत्येक ऑर्बिटल ले दुईटा इलेक्ट्रॉन रहइबो तेन कैपेसिटी ऑफ सबसेल केते हिजबो 2 into 12 plus 1 केते हिजबो 4l plus 2 जोटा मु लास्ट क्लास से पढैतिली कैपेसिटी ऑफ each subcell is given by the formula 4l plus 2 so students this is all about your magnetic quantum number which gives you the idea regarding orbitals okay each subcell contains some orbitals तुमको नंबर वाइज मन रखियो पड़ियो s subcell 1 orbital s orbital then p subcell 3 orbitals p x p y p z three possible directions x y z axis so px py pz orbitals then d 5 orbitals dxy dyz dxz dx square minus y square dz square accordingly f has several orbitals so this is how they can contain 2 electron each so this will be the capacity of each subcell and I have already shown you why the capacity of each subcell is 4l plus 2 देखाइ देली छुआ काहे की capacity का formula होछ 4l plus 2 okay students then next we will discuss the last quantum number that is called spin quantum number so students next we will discuss the last quantum number that is called spin quantum number spin quantum number it is represented as only small s or as ms okay spin quantum number so I have already told you already तुम कहि साची जे इलेक्ट्रॉन spins as a top continuously it spins as a top मान जानि छुआ not to बोलियर देखिथिबो so electron spins as a top in how many possible directions top can spin not to केतरा possible direction बोली परिबो either कहिथिल छुआ clockwise positively बोलिबो नले anti clockwise negatively बोलिबो so an electron can spin in two possible ways or two possible directions so the spin of electron is given by the fourth quantum number that is s so spin quantum number s can have two values either plus half or minus half clearly मन रखो छुआ spin quantum number which is fourth quantum number it can have maximum two possible values either plus half or minus half plus half is for clockwise orientation or clockwise spin and minus half for anti-clockwise spin जेतले छुआ इलेक्ट्रॉन टा बुलिबो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे ता स्पिन टा क्लॉकवाइज डायरेक्शन थिबो ताले ता स्पिन क्वांटम वैल्यू केते हबो ना प्लस हाफ जेता एंटी क्लॉकवाइज बुलिबो रिवर्स डायरेक्शन रे बुलिबो ताले ता वैल्यू हबो माइनस हाफ एक्चुअली जदी स्पिन देखिबा दुईटा पॉसिबल मींस अछि केवल आइदर प्लस रे बुलिबो दैट मींस क्लॉकवाइज बुली परिबो नले एंटी क्लॉकवाइज सो व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर ना 2 यू हैव टू रिमेंबर क्लियरली तुमको मन रखियो पड़िबो द स्पिन क्वांटम नंबर दुईटा वैल्यू रहइबो plus half for one complete orientation 1 so 50% is 1 by 2 here also 50% 1 by 2 तेणु से अनुसार प्लस हाफ दिया क्लॉकवाइज स्पिन को और माइनस हाफ दिया एंटी क्लॉकवाइज स्पिन सो आई एम जतरा ऑर्बिटल लिखु मन कर छ 1s लिखु सो व्हेन यू राइट ऑर्बिटल्स हमें कोन करू ना वी रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल इन अ बॉक्स तो हमें लिखु 1s रो वी हैव टू शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नो कोन करिया छ एमती गोटे देखेबू अप साइड रे आ गोटे देखेबू डाउन साइड रे सो कहि साची ऑर्बिटल के रेकमेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम गोटे ऑर्बिटल केते इलेक्ट्रॉन रहबो दुईटा इलेक्ट्रॉन रहबो कहिची विथ अपोजिट स्पिन सेम स्पिन रे रहि परिबे नाही सो देखो एपटा ऊपर को अप साइड डाउन अछि सो एटा कहै जाय छ स्पिन ऑफ पोजीशन ऊपर को रहिले कहै जिवो स्पिन ऑफ पोजीशन for which spin quantum number value is plus half हैला and this side तो जेतरा रहउची this is known as spin down position
हला तापा s वैल्यू केते हे जो छुआ ना माइनस हाफ ओके so very easy for quantum number spin quantum number there is only two values are possible plus half for clockwise minus half for anti clockwise तेणु जेटा हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखुछु कहि साइड ऑलरेडी गोटे ऑर्बिटल कैपेसिटी केते ना इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स तेणु हम कोन देखियो गोटे अप साइड एरो देखियो गोटे डाउन साइड एरो देखियो अप साइड एरो रिप्रेजेंट्स स्पिन ऑफ पोजीशन फॉर व्हिच s वैल्यू स्पिन क्वांटम वैल्यू केते ना प्लस हाफ आउट व्हिच स्पिन डाउन पोजीशन स्पिन क्वांटम वैल्यू होचे माइनस हाफ बट you have to remember that जदि बनकर जेकोन ऑर्बिटल गोटे इलेक्ट्रॉन अछि you cannot predict whether it is spin up or spin down okay so सेटा प्रेडिक्ट करि हबन तार s वैल्यू प्रेडिक्ट करि हबो नाही we can only speak of the possible values of s the possible values of s is plus half and minus half okay so these are the four quantum numbers and it gives you the details of electron केमती देखो फर्स्ट होला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को आईडिया पाइलो छ ना से पाइलो तुमे नंबर ऑफ सेल को सेल ले इलेक्ट्रॉन टा रहिछ टू व्हिच सेल द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स then next asila azimuthal quantum number l which idea you got now you got the idea regarding subcell ko subcell le electron ta rahi then next is your magnetic quantum number m which gave you the idea regarding orbital ko orbital le se electron ta rahila then last one is regarding the spin of the electron it can have a plus half value for positive or clockwise orientation or minus half value for negative or anti clockwise direction okay so these are the four possible values केमती छुआ यूज करिया ताकू मन करो मु कहबी गोटे कॉन्फ़िगरेशन होची 2px1 so you wish to write down the electronic configuration like this is called orbital notation आसी बया परे we can write the electronic configuration तुमे बतन जाय cell notation सिखितलो cell wise लेखुतलो 2 8 8 एमती कर लेखुतलो छ so next we will learn two different types of electronic configuration that is SPDF notation that is subcell wise notation and orbital notation orbital wise you have to arrange the electrons or accommodate the electrons तो हम दुई प्रकार छुआ लिखि परिबा गोटे होची SPDF notation लिखि परिबा नहले छुआ orbital notation लिखि परिबा so which I will teach you okay so suppose वन कर लिखिली गोटे electronic configuration last टा लिखुची केवल 2px1 so बळे ये superscript छुआ से it gives you the number of electrons ऊपर जोटा हम लिखुछु ताको कोछु सुपरस्क्रिप्ट कर दोछ तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तापरे ए जो नंबर ता फर्स्ट लिखाई छी n एटा होची वैल्यू ऑफ n फर्स्ट जो नंबर ता दियाई छी द फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज फॉर वैल्यू ऑफ n दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सो मन रखो छ क्लियरली फर्स्ट जो न्यूमेरिक वैल्यू ता दियाई छी इट इज already or it is always for principal quantum number n superscript जोटा लिखुछ number of electrons तापर रहि गला p ता माने सबसेल एटा हला सबसेल होची कोडा px कार ऑर्बिटल p सबसेल हला p ऑर्बिटल हला px so from a single notation we can predict regarding everything okay so 2 means the electron belongs to the second cell electron belongs to l cell for which n value is equal to 2 गाड़ी पछो छ फर्स्ट कोन कहली प्रिंसिपल क्वांटम वैल्यू देबो n वैल्यू 2 माने कार को सेल l सेल तापर सब सेल हैला p काई लिखाई छै क्लियरली p तो l वैल्यू केते l वैल्यू इज 1 orbital is px that means spatially it is oriented against x axis तेणु p सबसेल छ तीनटा ऑर्बिटल रहबो px py pz ता भीतर ये px ऑर्बिटल अछि केतरा इलेक्ट्रॉन अछि गोटे so from this notation what we can predict now there is one electron in px orbital of p subcell of second cell आउथरा कहि दउ सुनो एठी कोन अछि गोटे इलेक्ट्रॉन अछि कोठी अछि ना px orbital of p subcell of the second cell लो p subcell लो px orbital ले गोटे इलेक्ट्रॉन अछि या माने होछि से so this is how we can predict regarding the exact position of the electron by knowing the four quantum numbers kon na n l m and s okay then students we learned how these orbitals atomic orbitals are filled up
atomic orbitals are filled up in by following various rules. There are 3 rules which we will discuss in the next class. Suppose the question is there are 2 orbitals available, 1s and 2s. My question is to which orbital the electron will enter first. को orbital टा आगे fill up हो, कोटा परे fill up हो. Okay. So accordingly हम जानी सारछु जेतु तुमे कहि परियो छुआ 1s टा आगे fill up हो, 2s टा परे fill up हो. Because I already taught you to write down the electronic configuration in a simplified manner. What a simplified manner तुमको सिखै साछि. But how come you know? केमति जानिबो जे 1s टा आगे fill up हो, 2s टा परे fill up हो. So there are certain rules which control or govern rules for filling up of atomic orbitals. तीनटा रूल रहइबो छुआ हमें पढ़िया डिटेल ले. So there are 3 rules which govern or control the filling up of atomic orbitals. Number 1 rule is called Aufbau principle. AUFBAU, Aufbau principle, or it is also known as building up principle. Building up principle. So under this we will also discuss regarding n plus l rule. n plus l rule कहि साथी छुआ प्रिसाइजली जेंति नेक्स्ट क्लास सुधा तुमे कहि देला मते जानि परथु n वैल्यू केते l वैल्यू केते. ओके. n plus l rule which decides the energy of orbitals. Orbital energy decide करे किए ना n plus l rule which we will discuss under the above principle. Above principle कोन कहउची the atomic orbitals are filled up in the increasing order of their energy. तेणु सिंपल प्रिंसिपल जे जार एनर्जी कम से आगे फिल अप होबो, जार एनर्जी बेसी से परे फिल अप होबो. बट हाउ टू नो व्हिच ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी, व्हिच ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी केमति जानि छ. कहार मन का से 1s 2s आमे कहू 1s ता फिल अप होबो, ता माने 1s रो एनर्जी कम नै हेती, 1s हैज लोअर एनर्जी देन 2s, दैट्स व्हाई इट इज फिल्ड अप फर्स्ट एज पर अबव प्रिंसिपल. बट हाउ टू नो 1s हैज लोअर एनर्जी, ना इट विल बी नोन बाय n plus l rule which we will discuss in the next class. Next rule which governs the filling up of atomic orbitals is called Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. ये कौन कहूची ना no two electrons will have all their 4 quantum numbers alike. कौनसी भी दुईटा इलेक्ट्रॉन रो चारटा का क्वांटम नंबर समान हे परिबो नाही. सो द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इज यूनिक. प्रत्येक इलेक्ट्रॉन रो क्वांटम नंबर यूनिक कहितली छुआ. दिस क्वांटम नंबर्स आर कॉल्ड पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जेमति तुमर पोस्टल एड्रेस टा यूनिक, इट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय एनीबॉडी एल्स. तुमरी एड्रेस रो तुम नाम थाई कि आगे पिला रही परिबेनी, सेमति कौनसी दुईटा इलेक्ट्रॉन चारटा क्वांटम नंबर समान हे परिबो नाही. नो टू इलेक्ट्रॉन्स और विल हैव ऑल देयर 4 क्वांटम नंबर्स अलाइक. सेटा कहै जाय छुआ Pauli's exclusion principle. Then last principle which is applicable only for selective cases is called Horn's rule. Horn's rule. It is not applicable for all the atomic orbitals. It is only applicable for degenerate atomic orbitals. It is only applicable for degenerate atomic orbitals. Degenerate atomic orbital का कोई बचवा ना कोई साथ ऑलरेडी वी कैन कंपेयर द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय व्हिच रूल ना n plus l रूल. n plus l रूल जहार जेते अधिक तार एनर्जी सेते अधिक, जहार n plus l वैल्यू कम तार एनर्जी कम. सो व्हिच विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. से अनुसार ये सब ए हॉर्न्स रूल ता सब पाई सब ऑर्बिटल पाई एप्लीकेबल नुहे. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर degenerate atomic orbital. Degenerate means orbitals having same energy. Orbitals having same energy are called degenerate atomic orbitals. So next class हम details से पढ़िया ये तीनटा rule. Why? Because we have to learn the electronic configuration. We have to learn how these atomic orbitals are filled up. आपको सिखिबार अछि ये atomic orbital गुडा केमति fill up हेबे, को order रे fill up हेबे. तेणु सेटा
शिखिबा पई we have to follow these three rules: Abbau's principle, that is building up principle, Pauli's exclusion principle, and Hahne's rule. That is applicable for only degenerate atomic orbitals. Okay, students. So next I'll give you some assignments and we'll meet in the next class. So this is for today. Thank you very much.